Dear students, welcome to all to my channel. The legend behind the legend is the second chapter of plus 2 first year English. Plus 2 first year English करो the legend behind legend होची second prose. आमे तारो unit 1 और unit 2 complete करथिले. Description रे तारो link दिया है तुम्हें चाहिए से लिंक ऊपर क्लिक करी ए सब वीडियो देखि परिबो. Unit 1 और Unit 3 तारो क्वेश्चंस रे मध्य डिस्कशन हेछि. आउ जदि तुमे फर्स्ट ईयर आउ किछ इंग्लिश वीडियो देखिया चाहछो डिस्क्रिप्शन रे प्लेलिस्ट रो लिंक मध्ये दिया है जहार ना होची प्लस 2 फर्स्ट ईयर इंग्लिश वीडियोज. तले यूनिट 1 यूनिट 2 में कंप्लीट करिछे मु से बिषय कहूनी. वर्तमान ए वीडियो रे हमें यूनिट 3 कंप्लीट करबा बुझिबा टोटल तापर हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा. ठीक अछि समस्ते मन दे वीडियो को लास्ट पर्यंत देखो जमा भी स्किप करिवो नाही एवं क्वेश्चन आंसर निज मनोर करे चेष्टा करिवो फास्ट तापर मु डिस्कशन कले तुमे मैच करिवो. वीडियो भल लगे लाइक करिवो आ निश्चित भाव में तुम फ्रेंड मन सहित शेयर करिवो. लेट्स स्टार्ट द वीडियो वार्म अप यूनिट 3. Mr. Chaudhary had many interesting stories to tell about Khairi and the other pets at his home. Mr. Chaudhary, Sarojra Chaudhary, Mr. Chaudhary had many interesting stories to tell about Khairi and the other pets at his home. He had several stories to tell about Khairi, female tigress, and the other pets at his home. Several stories were there. Read the following unit of the text for the details. Details जाने पे हमें पढ़िबा. Here is the first story that emerged means came out. The first story that came out from this very unusual man. Who was the very unusual man? Sarojra Chaudhary. Between sips of coffee माने जतले कॉफी से माने पिउथिले तले मिस्टर चौधरी and the author started talking while sipping the coffee. As you will see, I have different species of wild animals in this house. Then Mr. Chaudhary told the writer that he had different species of wild animals in that house. तांको घरे बहुत प्रजातिर वन्य प्राणी अछंती बोली कहिले के सरोजरा चौधरी. And he also added से आहुरी मध्ये कहिले कोन ना they all came in at different stages of their lives. ताले they had come. Who had come? The different species of wild animals had come there. There means to Sarojra Chaudhary's house at different stages. Different stages means in childhood or in young age. विभिन्न अवस्था आमर था जेमती पिला बेଳ आमे कहूचे चाइल्डहुड पिला बेଳ छुआ बेळ सेमती जुवा अवस्था रे यंग कहि परिबा बा अडल्ट कहि परिबा. इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ तांको जीवन रो विभिन्न स्तर रो बा अवस्था रो से माने आछंती एवं गुटे जगह रे रखाई छी बुझुची. I have debunked the theory. Debunked means displaced. Who debunked the theory? माने के सब बखाणिले सरोजरा चौधरी. That they cannot coexist. जैसे माने cannot coexist. Coexist means coexist माने होची live together एकत्र रहिबा. Unless they are together from infancy. जेतु से माने childhood. Infancy means childhood. जेतु से माने पिला बेळ वासी नाहंती से माने केमती कोन रहउछन रिएक्शन कोन होची से विषय जाने पे चेष्टा करले. ताले सरोजा चौधरी had debunked the theory that different species of animal could not coexist. से मन रही परिबे नाही एकत्र unless they were together from infancy. Infancy माने childhood रो आसले ही रही परिबे नले विभिन्न स्टेज रो आसी रहिबाटा तांका बकरे impossible. One thing I wanted to experiment with was the reaction of a young tiger to a snake. तले once he wanted to experiment से तरे परीक्षा करिया चाहूतले but the reaction of a young tiger to a snake. Young tiger रो गोटे बाघ प्रति रिएक्शन young tiger आ snake साप प्रति रिएक्शन कोन होची ताको देखिया पे परीक्षा करिया चाहिए. at the time खैरी was very young. से समय खैरी कोन थिला बहुत young थिला. One day when खैरी was much younger we found a baby crate in the house. Baby crate माने रोना साप तुम जानिछो. Crate is a poisonous snake. बुझुची. One day they found a crate in the house. We know crate is a poisonous snake. हमें जानिछे भला परे.
I was noting Khayri's reaction to its presence. To whose presence? To the poisonous snake creates presence. तार उपस्थिति रे तार खैर रिएक्शन कौन होतला? I was noting. नोट करुले सरोजरा चौधरी. Khayri was curious to know more about this strange new creature. Khayri was curious about that new creature. से नुआ सृष्टि बा नुआ जीवर प्रति तार क्यूरीयस क्यूरीयोसिटी अधिक थिला बुझुछु माने एटा स्ट्रेंज नुआ अद्भुत नूतन पशुटी किए बा प्राणीटी किए बुझुछु वेरी सिंपल पिला माने एवरी टाइम द क्रेट गॉट टू क्लोज टू खैरी आई वुड पुल इट बैक बाय इट्स टेल जेतेबेले प्रति थर एवरी टाइम द क्रेट बा रणा साप वाज गेटिंग क्लोजर टू खैरी खैरी पाखर अति पाखु जाउतला बारी सरोजरा चौधरी वाज पुलिंग इट बैक तक पछरो टाणी दउथिले बाय इट्स टेल बुझुछि वेरी सिंपल पिला माने this went on for some time this continued for some time बहुत समय धरि एमती चलिला at some point particular गोटे समय रे I must have been a little unmindful टिके केयरलेस हे गली बा टिके अनमाइंडफुल अन्य मनस्क हे गली के सरोजरा चौधरी but at some point when he was a little unmindful कौन हैला पढ़िबा में it turned around and beat me ताले it means the poisonous snake crate turned around बुली पड़ला and beat me beat means beat सरोजरा चौधरी बुझुछ तापर कौन हैला ना I immediately tied a tourniquet above that तापर गोटे tourniquet बा पट्टी बांध देइथि tourniquet रो माने तुमे जानिछो a piece of cloth bound tightly on an arm हाथ रे बांधबा जोरे गोटे प्रकार कपड़ा और a leg to stop bleeding ना हबा पाई बुझुछि मिस्टर चौधरी immediately tied a tourniquet about the spot से spot रे संग संगे काहे कि ना bleeding को कंट्रोल करे to control the bleeding और to get the poison out विष को बाहर कर दा पाई I saw the doctor as soon as possible immediately he consulted the doctor he saw the doctor as soon as possible luckily to his good fortune सौभाग्यवशतः it was a baby से जोटे बेबी बा गोटे छोट क्रेट थिला छोट तार एते विष नथिला still some of the poison got into my blood stream किंतु रक्त रे किछि मात्रा रे प्रवेश करिथिला तार विष still some of the poison had got into his blood stream तापर कौन हैला ना I am now as a result फलस्वरूप I am now a permanent patient of hypoglycemia बुझुछि hypoglycemia होछि गोटिए कोन आ गोटे डिजीज जाको हम कहउछे नीच रक्तचाप कंडीशन ऑफ हैविंग ए वेरी लो ब्लड प्रेशर तार गोटे परमानेंट पेशेंट हे जाइथिले बुझुछि ना नै पिला माने वेरी सिंपल फर्स्ट ईयर रो बहुत गुटे वीडियो अपलोड हे गेलानी तुमे प्लेलिस्ट जाके देखिबो आर पार्ट 1 पार्ट 2 मध्ये तुमे देखि परबा यूनिट 1 यूनिट 2 डिस्क्रिप्शन रे लिंक दिया हिची ताको तुमे नेक्स्ट भाबरे देखिबो ओके नेक्स्ट पार्ट हमें बा नेक्स्ट पारा हमें देखिबा बाय द टाइम ही फिनिश्ड दिस एस्टोनिशिंग स्टोरी जम्बू took a fancy to me and climbed behind to me his bear hug by this time he finished his astonishing story when they were talking jumbo के हम जानि छे yes bear took a fancy to me took a jump to me and climbed behind to give me and he climbed behind the writer to give him his bear hug जो माने हक जो कुहा हुए कुंडा हुए जेमती बियर स्टाइल रे बियर हक जाक हम कहउछे तुमे देखिथिबो टेडी बियर जेमती हक करे से स्टाइल रे राइटर को हक करे को भारतला स्टर्न मींस गोटे कड़ा ना गोटे स्ट्रिक्ट नो ना बोली एमती कहले के सरोज स्टर्न नो कोन हला ना वाज एनफ टू डिसवेड हिम फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ऑफ फॉन्डनेस सी जो गेल्हा रे बात स्नेह रे जेमती कथा ताको डिसवेड कला मन ताको एमती चित्र करियारु बारण कला डिसवेड हिम फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन ऑफ फॉन्डनेस as the day progressed the day continued दिन चलला as the day progressed between our conversation and the intermittent crackle एवं ता भितर गोटे बाधा देला बेला गोटे शब्द आसीतला intermittent crackle माने किछि साउंड आस्तला on the VHF
वायरलेस VHF वायरलेस रु बुझी क्या पाखे जो सरोजरा चौधरी पाखे थिला सेट बाय व्हिच ही वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन जहाँ द्वारा से इंस्ट्रक्शन देउथिले टू हिज मेन इन द फॉरेस्ट जंगल थिबा तांको लोक मानकु आई गॉट टू नो ए वेरिटेबल जॉइंट फैमिली वेरिटेबल माने डिफरेंट विभिन्न प्रकार जॉइंट फैमिली गोटे देखा पाइले राइटर दैट वाज लिविंग इनसाइड द कंपाउंड जो कि गोटे कंपाउंड रो गोटे कंपाउंड रे थिला ए मंगूज ए पांगोलिन वाइल्ड कैट ट्विन्स ए कंट्री डॉग एंड ए ब्लाइंड हायना ये छाड़े नेम समस्त गोटे गोटे ना था ये मानक नहीं तुम जान समस्त मीनिंग मंगूज पांगोलिन सब जान तेणु समस्त को लेकिन गोटे परिवार भाई एकाठी चलु था सरोजरा चौधरी बुझे ई छाड़े नेम ई छाड़े पर्टिकुलर नेम ठीक अच्छे तुम्हें आउ थे प्ले करके बुझीपार विषय को बारंबार ग्लोसरी देती डिबंग टर्निकेट हाइपोग्लाइकेमिया टेक ए फैंसी इंटरमिटेंट आउ क्रैकल मेक शॉर्ट शार्प साउंड के शब्द करवा क्रैकल ओके टेक ए फैंसी मीन्स टू स्टार्ट लाइकिंग सब जन पसंद करवा ओके टेक ए फैंसी बर्तमान तुम क्वेश्चन आंसर तुम मनरू करने ट्राए कर एवं मुझे डिस्कसन कर दूसरी कहीं मनरू करने दरकार पे भेरी इजी अच्छी क्वेश्चन पढ़ और वीडियो को चाहूँ आउ थे देख और आंसर करने ट्राए कर बर्तमान मु आंसर करने बाध्य हो तुम कर सारिबनी व्हाट थ्योरी डिड मिस्टर चौधरी प्रूव रॉन्ग मिस्टर चौधरी प्रूव्ड द थ्योरी दैट डिफरेंट स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉट कोएक्जिस्ट unless they are together from infancy wrong ओके तुम चाहिए को नोट कर बारंबार धीरे धीरे शुणिक लिखिपार बारंबार नोट कर किसी असुविधा नहीं आउ थे कहूँ नंबर 1 आंसर मिस्टर चौधरी प्रूव्ड द थ्योरी दैट डिफरेंट स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉट कोएक्जिस्ट unless they are together from infancy wrong okay number 2 What was his first story about? His first story was about his experiment on a young tiger's reaction to a snake. To speak about it, Mr. Chaudhary said how Khairi reacted when a crate was nearing her. Okay, number 3. Why is it so unique and amazing? The experiment was unique because no such experiment was carried on before. ये भले आगुरु ही नथिला. The experiment provided its observers amazing result. Okay. The experiment provided its observer amazing result. Number 4. Why did Mr. Chaudhary allow Khairi to come near a crate? कहीं के allow करथिले खैरी को पाखु जापाई ना मिस्टर चौधरी नंबर 4 आंसर होची मिस्टर चौधरी wanted to experiment the reaction of a young tiger to a snake. One day a baby crate was found in the house. It was an opportunity to carry out his experiment. So Mr. Chaudhary allowed Khairi to come near a crate. तुम आंसर करथिबो मैच करथिबो कि असुविधा नहीं विषय तो बुझिलो क्वेश्चन आंसरटा तुम करिया कथा कि तुम डिस्कशन कर दो तुमको हेल्प पाई नंबर 5 व्हाट वाज खैरीज रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ ए क्रेट खैरी रिएक्शन कौन थिला क्रेट को देखि कि ना खैरी वाज क्यूरियस टू नो मोर अबाउट द न्यू क्रिएचर द क्रेट बिफोर हर खैरी वाज क्यूरियस टू नो मोर अबाउट द न्यू क्रिएचर द क्रेट बिफोर हर नंबर 6 How did the experiment affect him? केमती experiment affect करतला number 6 answer the experiment had serious effect on Mr. Chaudhary. The experiment had serious effect on Mr. Chaudhary. When the crate, the venomous snake was getting closer to Khairi, Mr. Chaudhary pulled it back by its tail, but unfortunately he was bitten by the crate. When he was a little bit unmindful, he took all precautions and the doctor treated him, but he was left as a permanent patient of hypoglycemia. मैं पढ़िचे number 7. What did the bear try to do with the writer? कौन करे बाहर थिला कौन कला ना the bear Jambu took a fancy on the writer.
To express his fondness towards the writer, he climbed behind him to give him his bear hug. Okay. Number 8. What prevented the bear from doing so? एमती करने पे कौन बात देइथिला ना a stern no from his master Mr. Chaudhary prevented the bear from giving the writer his bear hug. A stern no from its master Mr. Chaudhary prevented the bear from giving the writer his bear hug. Okay. Number 9. What kind of family did Mr. Chaudhary have? को भले family थिला ना Mr. Chaudhary had a veritable joint family that was living inside one compound. It was a family constituted of human beings, a mongoose, a pangolin, wildcat twins, a country dog and a blind hyena. Each animal had a phone name. समस्तଙ୍କର किछि ना थिला. Number 10. What was his relationship with different animals? Mr. Chaudhary was very kind and considerate towards different animals. He was concerned about them and treated them affectionately. ठीक अछि पिला माने 10टी क्वेश्चन हम डिस्कशन करले यूनिट 3 कंप्लीट करले तुमे डिफिकल्ट वर्ड मध्ये आरे किछि नोट करि परिबो वीडियो देखि कि बारंबार वीडियो देखो इजीली हे जिवो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू कीप वाचिंग माय चैनल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू